Hello students, today I'm gonna explain the poem The Road Not Taken, which is the very first poem of the first chapter of the book Beehive. The poem The Road Not Taken is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet who usually writes about his real experience and the nature. So many poems he has written in which he has mentioned about the real life stories in his own words. This is one of them, The Road Not Taken. The Road Not Taken is a poem where Robert Frost has written about his experience once he had to choose one way out of two. The way he has chosen was accepted, and the road, the way he had not chosen, that way is titled as The Road Not Taken. Here the road symbolizes our life, and the path that we don't choose is the road not taken. There are 4 stanzas in the poem, so I'm gonna explain the poem stanzas by stanzas. Okay, the first stanza I'm gonna read and explain. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. The first line is, two roads diverged in a yellow wood. The word diverged means separated in different directions. In a yellow wood is the time of forest when it gets into yellow. Like in autumn season, we see the leaves turn into yellow. So this is the story, or this is the poem that was written during the autumn time. So here the poet wants to say, when he was traveling somewhere, in front of him there were two ways diverged in front of him, and he had to choose one of them. And the situation is in the forest in the month of, or in the season of autumn. The poet says, and sorry I could not travel both. This is very true. A person can travel on one way only. So he mentioned that I felt sorry that I could not travel both. I had to choose one of them only. That's why he felt sorry, because if we are given two things to eat and we are said just pick one of them, we cannot choose both of them. We have to choose one of them, and for the second thing we will feel sorry. Here similarly the poet felt sorry because he had to choose one of them and he could not travel both. And be one traveler, long I stood, or one traveler, being a traveler, long I stood. He stood for a long time and just looking at both the ways, which one is suitable for him to choose. And that's why he waited a long time just to wait, just to get, or just to accept one of the ways, and looked down one as far as I could. And he looked down both the ways. He looked down both the ways as far as I could, till his sight goes. He stood over there and just looking at the roads till where his sight goes at the end of the road, where the roads turned into the different directions, to where it bent in the undergrowth, where the ways turn in another direction. Now in Hindi I'm gonna just tell you, जब एक बार रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने रास्ते से एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, ऑटम का महीना था, सारे जो पेड़ पौधे थे, पेड़ के जो पत्ते थे वो पीले पड़ गए थे, वहाँ पर उन्होंने 2 रास्ते देखे और उनको 2 में से एक रास्ता चूज करना था, इसलिए उसको सॉरी महसूस करना पड़ा। उनको अजीब लग रहा था कि मैं दोनों रास्ता नहीं चूज कर सकता, क्योंकि जब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वी हैव टू चूज वन ऑफ देम। लाइक आफ्टर 10th you have 3 options to choose, either arts, commerce or
science, but you have to choose one of them. Similarly here he had to choose one of them. और एक ट्रैवलर होने के नाते वो दोनों रास्ते को अच्छे से परखा मीन्स कि वो एक एग्जामिन किया कि कौन सा रास्ता इसके लिए बेहतर होगा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को वो काफ़ी दूर तक जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच रही थी उसको देखने लगे, उसको एग्जामिन करने लगे. कहाँ तक देख रहे थे? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वहाँ तक उसकी नज़र पहुँच रही थी जहाँ तक वो रास्ते अपना टर्न न ले लिया हो, जहाँ तक वो रास्ते नज़र आते हैं. हम लोग भी देखते हैं कुछ रास्ते नज़र आते हैं जहाँ तक दिखाई देते हैं और आखिरकार वो कहीं मुड़ जाते हैं, या नीचे की तरफ या ऊपर या दाहिना, इस तरह से वो मुड़ जाते हैं. नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. पोएट वांट्स टू से कि ही डिड चूज द सेकेंड वे just as fair, and having perhaps the better claim, he feels that both the ways are equally same. That's why he chose second one. He left the first one. When he chose the second one, he felt that the second one is better than the first one. Why? Because, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. He chose the second path because he felt that the second path is way better than the first one, because it was grassy, because there was grass, and it was wanted wear. Wanted wear means what? Had not been used, or the people have not walked over it, and that's why it was looking new. That's why he chose the second one. Though as for that, the passing there, but after a few minutes, poet Robert Frost thought or faced that after walking a few kilometer or few steps, he found that both the ways were same. Means after walking few minutes, he found that the way is equally that the first one was. It means after few steps, he found that there was no grass and it was equally same as the first one. Had warned them really about the same. As he walked further, he found that both the ways are equally stepped by the people and there was no grass after few steps. So in Hindi, the poet then took the other just as fair. Poet Robert Frost दूसरा रास्ता चूज करते हैं ये सोचते हुए कि दोनों देखने में सेम लग रहा है, and having perhaps the better claim, और उनके मन में एक थोड़ा सा डाउट भी गया था कि शायद दूसरा वाला बेहतर है. क्यों? क्योंकि उस पर ग्रास था और दिखने में लग रहा था कि उस पर लोग कम चले हैं. नॉर्मली जब रास्ता हम लोग देखते हैं किसी ग्राउंड से, जो रास्ते ग्राउंड में पूरे ग्रास है लेकिन बीच में एक रास्ता बना होता है जिसमें एक जरा भी ग्रास नहीं, इसका मतलब उस रास्ते में बहुत सारे लोग बार बार चल रहे हैं, लेकिन जहाँ ग्रास है और हल्का सा मिट्टी भी नजर आ रहा है तो हम लोग समझते हैं कि उस पर लोग कम चले हैं. एंड दैट्स वाई ही चोज द सेकेंड वन. दो मगर जैसे वो आगे गए, थोड़ा दूर आगे गए, उसने देखा कि वो रास्ता भी उसी तरह से है जैसे पहले रास्ता है जिस पे ग्रास नहीं है. दैट मीन्स कि थोड़ी दूर चलने के बाद उनको एहसास होता है कि दोनों रास्ते सेम थे. हमने ये रास्ते शुरू में जो स्टार्टिंग में हमने देखा कुछ ग्रास है तो मुझे लगा कुछ अलग होगा, बट जैसे आगे गए तो इसी तरह से लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे मैंने साइंस और कॉमर्स की बात की, आर्ट्स की बात की, शुरू में लगता है कि अरे साइंस में ये सब्जेक्ट्स है तो इट में बी टफ, आर्ट्स में ये है, लेकिन अगर आप आगे जब 2 महीने 4 महीने पढ़ लोगे तो ये दोनों इक्वली टफ है. दोनों को आपको इक्वल माना, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में ऐसा सारी चीज़ अपने में टफ होते हैं. इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक CA करना, MBBS करना बहुत टफ है. अपने अपने सेक्टर की बात होती है कौन किसको कैसे लेते हैं. नाउ द थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. पोएट वांट्स टू से कि दैट मॉर्निंग व्हेन आई वाज टू चूज द वन वे, both the ways were looking same, equally lay. In leaves, no step had trodden black. When I had to choose one way out of two, the two ways were looking same, and both the ways were hidden with the leaves, and no step had trodden black. That means no people had walked over that particular ways. Oh, I kept the first for another day. And that's why he said that I left the first one for another day and I chose the second one. As it is mentioned before, that the poet Robert Frost had chosen the second one and first one he left. He thought that I would travel on that particular way another day.
but once something is chosen, if we choose science, we cannot come back after 2 years to choose arts or commerce. Similarly, here poet says that I chose the second one. Yet knowing how way leads on to way. Poet knew that if I choose the one way, I cannot come back, because I know how way leads to another. That how way leads to another way. That means when we step into a way, that leads further forward, not coming back. Similarly, he said that I chose the second way, yet knowing that how way leads to another. I doubted if I should ever come back. And poet also doubts that he might not come back to choose another way. Means he had to choose one of them carefully. If he takes one, he cannot choose two. If he chooses two, then he cannot come to one. That's why he said that he doubted that he would come back or not. In Hindi, उस सुबह में पोइट देखते हैं दोनों रास्ते जिस दिन उनको चूज करना था सेम सेम लग रहा था, उसको कुछ अलग नहीं लग रहा था। दोनों लीफ से ढके हुए थे, कोई भी कदम नहीं चला हुआ था। इसलिए उसने कहा कि मैं दूसरा वाला रास्ता चूज कर लिया, पहले वाले को किसी और दिन चूज करने मतलब किसी और दिन इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया। जैसे कि मान लो कि घर में 2 चीज़ सामान रखे हुए हैं खाने को, तो आपने एक खा लिया और दूसरे को कहा कि कल खाएंगे, इसी तरह से उसने। लेकिन आपको मालूम है कि अगर एक रास्ता आप चूज कर लिए तो आप उससे आगे बढ़ोगे, फिर पीछे आने में बहुत वक्त लगेगा, उतना वक्त आपका बर्बाद होगा। कोई इंसान ऐसा नहीं करते हैं। और उसको ये भी मन में डाउट था कि मैं एक रास्ता चूज कर लूंगा तो दोबारा आना बड़ा मुश्किल होगा। Now the last stanza. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Poet wants to say that कि if I had chosen the second one, so after a long future, after a long years, after a long years, I will be telling this story to my grandson or to my son or to my neighbors, that somewhere ages and ages hence, in the future, after a long years, I will be telling this to my grandson or somewhere in my neighbors, that once I had to choose one way out of two, and I took the one less traveled by. And I would say that I had to choose one way out of two, and I had chosen the one which was wanted wear, that had grass on it, and that has made all the difference. And this is the result of choosing that particular grassy land and what I am today. If suppose the poet has become a doctor, then he would say that it was the time when I chose science that way leads me to become a doctor. Similarly, I'm going to explain it Hindi the last stanza. The poet कहते हैं कि इन फ्यूचर में काफ़ी सालों के बाद चाहे मैं अपने पोते को अपने बेटे को एक दिन ये कहता हुआ नजर आऊँगा कि अगर हमारे लाइफ में अगर जो भी हूँ मैं आज 60 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में जो भी हूँ मैं आज वो जो भी कुछ मैं बनाऊँ, आइदर डॉक्टर हूँ, टीचर्स हूँ, साइंटिस्ट हूँ, जो भी हूँ, तो वो आज मैं नहीं बनाऊँ। ये उस दिन मुझे चूज़ करना था कि मुझे साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। उसको उन्होंने लाइफ के ऑप्शंस को रखा है, जैसे कि 2 रास्ते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को ये बताता हुआ नजर आऊँगा कि एक बार ज़िंदगी में 2 वेज मिले थे हमारे सामने और मुझे उसमें से एक चूज़ करना था, और मैंने उस वे को चूज़ किया जिसमें ग्रास थे, और वो ग्रासी लैंड ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचा लाया है। मतलब ये कि वो मेरा उस दिन का डिसीजन आज मेरे लाइफ को बनाया। अगर मैं ख़राब स्थिति में हूँ, दयनीय स्थिति में हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं खाने पीने के लिए तरस रहा हूँ, तो भी उसका वजह वही रास्ता होगा जब उसको चूज़ करने को मिला था। इसीलिए पोएट वांट्स टू से कि कभी भी रास्ते मिले लाइफ में, जब ऑप्शंस मिले, जस्ट डोंट एक्सेप्ट इट विदाउट एनी विदाउट थिंकिंग, जस्ट टेक योर टाइम, थिंक बिफोर इट, और उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन कर लो, देन चूज वन ऑफ देम, बिकॉज वही एक रास्ता, वही एक ऑप्शन है जो आपकी ज़िंदगी को आगे ले जाएगा। यू कैन नॉट कम बैक। आप ग्रेजुएशन करके फिर वापस आप आर्ट्स लेके पढ़ना नहीं चाहोगे। 11th-12th आपने साइंस से कर लिया, फिर बोलोगे कि नहीं साइंस के आगे बहुत टफ है और हम वापस 10th का एग्जाम 11th में फिर से एडमिशन लेके कॉमर्स लें। नहीं, इतना कोई टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आपके पास ऑप्शंस हो, चूज वन ऑफ देम केयरफुली, बिकॉज दैट वे विल लीड यू टू ग्रेट फ्यूचर, और it depends on how you live on that way. So here this is the summary that I have explained stanza wise. Now 2 things that is to be mentioned over here. This poem is written by Robert Frost, in which 2 things are important to tell you. The first one is
A figure of speech alliteration is used. 1 2 words I'm gonna tell you. Alliteration like wanted wear. Wanted wear, that WW, war. That's why. Again, the word is first for, for, that, the. Similarly, two roads diverged and two roads diverged are used twice. And these two words diverged and two words diverged are similar words. That's why they are called repetition. Means alliteration के भी कुछ words हैं यहाँ पर और repetitions के भी है. Repetitions के two road diverse, two road diverse और alliteration के wanted